Today we are going to learn calculator software. How we can develop advanced calculator through .NET coding. तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग .NET कोडिंग के थ्रू बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर बनाना सीखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, .NET की आईडी होनी चाहिए, जैसे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो .NET की आईडी आपको दिख रहा है, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडोज बन के आ जाएंगे और उस विंडोज में हम लोग चले जाएंगे फाइल के मेनू में जाएंगे। देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, फाइल मेनू में जाएंगे और हियर वी विल गो इनटू द फाइल मेनू एंड सिलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट एंड हियर वी विल क्लिक ऑन दिस न्यू प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे एंड नाउ we will go into the Windows application। ये क्या है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे there are different types of templates, बहुत सारे templates है। हम लोग इसमें से now we will select and choose of the Windows Form application templates। इस templates को लेंगे, फिर OK कर देंगे और जैसे OK करेंगे कुछ ही देर में, कुछ ही समय में आपको फॉर्म दिखेगा। उस फॉर्म पे हम लोग क्या करेंगे, टूल्स, सारे टूल्स को रखेंगे। टूल्स और कोडिंग की मदद से हम लोग कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो देखिए आपके सामने ये चीज बन के आ चुका है। आप इसे थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, जूम अप कर सकते हैं, वो आपके लिए है। ये फॉर्म विंडो आ गया बन के। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग कि इसे आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जितना आप चाह सकते हैं उतना आप इसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो थोड़ा वेट करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि थोड़ा स्लो काम करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस वन, है ना, दिस। अब देखिए थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, हम लोग इसे स्क्रॉल डाउन कर देंगे। ओके, और अब यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म 1 है ना बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे कैलकुलेटर लिख देंगे, एडवांस कैलकुलेटर। ओके, तो हियर we will कैलकुलेटर। ओके, आप देखिए आपके सामने वहां पे बन के कैलकुलेटर आ चुका है ना, दिख रहा है यहाँ पे हम लोग। अब क्या करेंगे, हम लोग एक टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे वी विल सिलेक्ट क्लिक ऑन द कॉमन कंट्रोल्स पे जाएंगे एंड नाउ वी विल क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स हम लोग लेंगे, आप ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हैं या वहां से भी आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टी लाइन कर देंगे। हियर वी विल क्लिक ऑन दिस मल्टी लाइन। तो क्या होगा, हम इसे रो और कॉलम्स यानी कि हॉरिजॉन्टली आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स आप इसे बना सकते हैं। देखिए लाइक दिस वन। ओके, और आप इसे थोड़ा सा और आप चाह सकते हैं तो बड़ा कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। दिस वन आप इसे थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ ऐसे भी आप कर सकते हैं ना। तो फिर आप इसे भी थोड़ा मिनिमाइज कर दीजिए। दिस इज द बेटर अप्रोच फॉर, आई थिंक इतने पे रहना चाहिए, उससे ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगा आपके लिए। और फिर आप इसे भी इतने पे कर दें। ओके, अलाइनमेंट के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं, वो आपको दिख जाएगा, आप इतने पे भी रख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, इसके फॉन्ट्स लाइन्स को हम लोग बढ़ा देंगे, साइजेस को भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, एंड फॉन्ट एंड लाइन एंड साइजेस को हम लोग क्या करेंगे, सपोज हियर वी विल क्लिक, हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड क्लिक ऑन द फॉन्ट्स। और फॉन्ट्स पे जैसे ही हम लोग जाएंगे वी विल क्लिक ऑन द बोल्ड, हम इसे बोल्ड कर सकते हैं ताकि जब भी आउटपुट हमारा टेक्स्ट आउटपुट्स दिखे तो प्रॉपरली हम लोग उस आउटपुट को विजिबिलिटी सही हो। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दे सेटिंग का ऑप्शंस का। ओके, हमने यहाँ पे इसे बोल्ड कर दिया एंड नाउ हमने हियर वी विल क्लिक ऑन दैट साइड 26 विल सी, ये आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, नाउ हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड वी विल सी, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैसे बटन्स को हम लोग लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट क्या करेंगे, हम लोग बटन्स को जो लेंगे, यहाँ पे हर बटन्स अलग अलग तरीके से। टूल बॉक्स में जाएंगे, फिर एवब करेंगे इसे और यहाँ पे जाएंगे बटन्स। देखिए बटन्स नाम से आपको एगो कंट्रोल्स दिखेगा, है ना, यहाँ पे बटन्स दिख रहे हैं। उस बटन्स को यहाँ पे हियर वी विल, यहाँ पे हम लोगों ने इसे रख दिया एंड नाउ वी विल सी, हम लोग देखेंगे यहाँ पे बटन्स जैसे हम लोगों ने लिया, यहाँ पे वी विल सी बटन्स 1। ओके, एंड इसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हियर वी विल कॉन्फ़िगर ऑफ दिस एंड नाउ वी विल क्लिक ऑन दिस। ओके, एंड इसे बोल्ड कर देंगे एंड नाउ वी विल क्लिक ऑन 36 दिस वन। ओके, एंड हियर बटन बना लेंगे। ओके, एंड राइट नाउ वी विल चेंज द टेक्स्ट चेंज कर देंगे एंड हियर वी विल राइट 1। ओके, सो हमने यहाँ पे हियर आई हैव चेंज्ड। ओके, राइट नाउ वी विल सी
this one. Again we will take copy, okay, and this and this, and here we will arrange the alignments, and here we will write the second. Only we will change the text, okay. So this one, and now we will see this one, okay, and this one. Again we will take another, right. Now we will take third buttons, okay, and here we will click on this. Again we will take plus, sorry, and this one, form one, okay, form one calculator. Here we will write calculator, okay, and now we will paste on this, and this is plus. Again we can change, this is we are going to design interface. Interface क्या है, this is very important for us. अगर if you have not designed the interface properly, it will not see, okay. So this is mandatory to design the interface for develop the software, okay. And now we will click on this one, plus sign, and we will see, and again we will take another this one. जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो क्या है, उस चीज को we must see properly interface. Interface is very important, क्योंकि इंटरफेस से किसी भी सॉफ्टवेयर की विजिबिलिटी अगर सही है तो वह यूजर फिजिबिलिटी एज वेल एज यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए. तो हम लोग को ऐसा विजिबिलिटी भी रखना है. कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं. राइट नाउ 4 you will write the 4, okay, and then you will write 5, this one, okay, you will write, and here you will write 5 text 5, okay, and this we will write this one, and now 6, and here 6, and here we will write 6, okay, and now minus, we will write minus sums, okay. So here we will see minus this one, and next we will see 7, 8, 9. Yes, Yanu, we'll write the 7, and then we will write 8, 8, 8, okay, and then we will write 9, then here we will. So here click, and again we will change. Then multiplication. Interface is very important. One thing must keep in your mind, if you do not design the interface properly, it will not user friendly, okay. So this is mandatory, and now we will click on this one, and we will see this, and then we will take the another like equal operation. This is a sign value, sign operation, and we will write on this text, and we will write double, and then we will take another 0, okay, and next we will take C. What is the meaning of C? C is that clear, all clear the text, okay. So now we will click on this 0, so that will show the 0, and here we will click on the C,
so that will show on the C. This is the clear. कैलकुलेटर पे यही रहते हैं, सी भी लिखा रहता है. समटाइम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेटर स्मार्टफोन पे ऐसे ही कैलकुलेटर्स के आप देखेंगे, यू कैन सी. एंड नाउ वी विल टेक revisions. Okay, so here we will use this one and click this one. Now what we will do, first we will generate the events. बच्चों क्या करेंगे, पहले हम लोग इवेंट को जनरेट करेंगे. तो टेक्स्ट का फर्स्ट we will see the events generate हो गए. Okay, now again we will click on the num1 पे हम लोग करेंगे. Now click this one. Okay, so here this is the better approach. First you must write all the output in a single text box. So what we will do, text box 1 dot text is equal to text box 1 dot text. Okay, and we apply choose a string, this one 1, because here we have generated events on button on. So here we will write. Okay, and now we will copy this text again because it will take save time. So here again we will generate the events on 2 and we will write on 2, and but here we will change the toes string values, that is 2, and again we will generate the events, that is 3rd, and we will write this paste and we will change the toes string value 3rd, that hold the address. Okay, so now we will generate the events of 4 and we will see that is 4, and now again this process will be continue till you have not completed the events. So here we will write on 5, and now again in 7 we will write this one and we will write 6, and now we will click on the 7. So here we will see this one 7. Again we will write on this and click on this 8 and we will see 8 and we will change 8, and now we will see 9, that will select the 9. Okay, so this one, and now we will click on 0, we can also write on 0, that is to string values. And now again next we will do generate the events on the plus sign, and we will see on the plus sign, before the plus sign we must define the variable with dim data type, with dim as well as data type. So here we will click on this one and we will go on to the top and write on the form 1, and then we will write the dim fn comma fn. You can write in a small variables fn comma sn as integer. Okay, so this is integer, and then we will write the dim sign as a string. Okay, and now we will change, here I have written, so here we must write fn. Okay, so you will see this one, and now we will go on to the form button, and now we will click on this, that is we will generate the events on the particular button. First of all we must generate the events, then after that we should write code. So here we will write this code. First we will this one and go onto this, and we will write the fn is equal to text box 1 dot text and sign is equal to double toes string, and we will write the plus symbols, and here text box 1 dot text, and this one is equal to double quoted string. We will write on the double quoted string this way, and this process will be continue all operations like plus operations, minus operations, multiplication operations. Only we will change the sign value. Okay, so here we will change the sign value, and now again we will click on this buttons and generate the events, this one, and we will write
multiplication symbols, and so here, and now we will generate the events on this mode, and here we will write on the division symbol. Okay, so now again we will go on to this clears, and here we will write text box 1. Here we will go on to this button and click on this. You will see text box 1 dot text is equal to and double quoted string, and you will see again we will click on this and we will click on equal to. This is the very interesting features on this, because every operations will be performed through this code button. So here we will write the sn is equal to text box 1 dot text, and if here we will apply the logic if sign is equal to double quoted string plus sign is equal to double quoted string plus, then text box 1 dot text is equal to fn plus sn. Okay, and then here I have applied this condition text box 1 dot text, and then again we will write else and write if sign is equal to. So here if sign is equal to double quoted string minus then text box 1 dot text is equal to fn minus sn, and then we will write the condition is that else, and we will write if sign can be right. Yes, if sign is equal to we will write on double quoted string asterisk, and we will write the symbols, and then we will write again this then and enter, and we will write text box 1 dot text box 1 dot text, and write the operation fn into, that is multiplication into sn. Okay, again we will write if else, and then we should write if, and if the condition is that sign, again this process are same, coding are same for all the operation, but sometimes you will change, like if sign is equal to double quoted and divisions, and then we will write text box 1 dot text box 1 dot text is equal to fn division sn. Okay, and now we will write endif, because we have used a number of times if else if, so we must write endif. Okay, please wait. So here we will write endif, and now we will write again endif. Okay, so here how many times? So here we should erase, because here I have defined 4 times, so we must close 4 times endif. So here I have completed all the operations, and now I will check this calculator who have developed by us. So is this working or not working? क्या है सॉफ्टवेयर जो हम लोगों ने बनाया, क्या कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं? तो नाउ वी आर गोइंग टू चेक to the compiler. So here we will click on this, that will compile, start debugging. So debugging will be start. Please wait for some moment. After some moment you will see कि आपके सामने output दिखेगा, and we can see every types of buttons you will appears. Sometimes you will see there are a lot of buttons like this. Okay, तो देखिए यहाँ पे बच्चे आप लोग ध्यान से देखिए, कैलकुलेटर बन चुका है, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बना लिया. Okay, and now we will click on this button 1 and click this button plus and 2 and click on the, that is working.
again this is a plus operation, and if you want to clear, so here we will see that will clear the statement. Again if we will take the 2 and then plus 3 and then you will click on this button equal 5, that means every buttons are working. Now again I am checking and clear and 3, second minus operations 2 and click on equal operation, that will show the 1, and again we will take clear and we will see 4 into 5 and equal to 20, and again you can click on this 8 divided by 2 and you will see that is the 4. So here we have developed software, calculator software, but one thing, ये कैलकुलेटर इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक सिंपल कैलकुलेटर भी बताया था। आज हमने क्या किया, ये स्मार्ट कैलकुलेटर है। ये स्मार्ट कैलकुलेटर क्या होता है कि पार्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में ही सारे चीज ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, और जो बेसिक कैलकुलेटर से जो आप लोगों को बच्चे हम लोगों ने आपको इनपुट करके आपको बताया था, तो आई थिंक आप लोगों को काफी इंटरेस्ट आया होगा। अगर आप लोग को एक कोडिंग लगे तो प्रॉपरली इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो यू कैन बेटर। एक कंडीशन याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये बहुत आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बदौलत ही आप इस चीजों को समझ पाएंगे, है ना। तो आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग को काफी इंटरेस्ट आया होगा और आप लोग इसको प्रैक्टिकली बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।